वर्ल्ड कप 2026 स्पेन ने जीता, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर एक और वर्ल्ड कप चल रहा था और वो कंपटीशन किसी दो फुटबॉल टीम्स के बीच में नहीं, दो सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स ब्रांड्स के बीच में था। नाइकी वर्सेस एडिडास। फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना दोनों एडिडास जर्सी पहनकर आए। ऑफिशियल मैच बॉल एडिडास का था, लियोनेल मेसी एडिडास के साथ था, लामिन यमाल एडिडास के साथ था और टूर्नामेंट खत्म होने से पहले ही एडिडास सोशल मीडिया अर्न वैल्यू, टीम विजिबिलिटी और प्रोडक्ट मोमेंटम में नाइकी से आगे निकलता हुआ दिख रहा था। तो क्या नाइकी हार गया? बिकॉज नाइकी ऑफिशियल फीफा स्पॉन्सर भी नहीं था। फिर भी उसकी वर्ल्ड कप कैंपेन ने टूर्नामेंट की पहले वीक में रिपोर्टेडली 1.5 बिलियन व्यूज जनरेट किए। नाइकी ने जर्सीज बेची, सेलिब्रिटीज यूज किए, स्ट्रीट फुटबॉल टूर्नामेंट्स कराए और वर्ल्ड कप को फुटबॉल इवेंट से पॉप कल्चर यूनिवर्स बना दिया। So today we are not simply asking which company sold more jerseys. The real question is who understands the business better, Nike और Adidas। और एंड में आपको बताऊंगा कि एक ऑफिशियल स्पॉन्सर होने के बाद भी कोई ब्रांड वर्ल्ड कप कैसे लूज कर सकता है और बिना एक ऑफिशियल स्पॉन्सर बने कोई ब्रांड कॉन्वर्सेशन कैसे हाईजैक कर सकता है। फीफा वर्ल्ड कप को हम नॉर्मली एक फुटबॉल टूर्नामेंट की तरह दिखते हैं, लेकिन ब्रांड्स के लिए वर्ल्ड कप एक मैसिव ग्लोबल अटेंशन मार्केट प्लेस है। एक पूरे मंथ तक बिलियंस ऑफ पीपल मैचेस देख रहे होते हैं, प्लेयर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जर्सीज खरीद रहे होते हैं, मीम्स शेयर कर रहे होते हैं, मैच प्रेडिक्शंस बना रहे होते हैं, प्लेयर्स के एयरपोर्ट लुक्स और ट्रेनिंग आउटफिट्स तक डिस्कस कर रहे होते हैं। वर्ल्ड कप के बिल्डअप पीरियड में अप्रैल 1 से जून 10 तक लॉन्च मैट्रिक्स ने टूर्नामेंट रिलेटेड मीडिया इंपैक्ट वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली $5.6 बिलियन एस्टिमेट किया। यूरोप ने सबसे ज्यादा वैल्यू जनरेट की, फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। दैट मींस वर्ल्ड कप के अंदर जो हो रहा है that is actually half the story. The other half is happening on Instagram, on YouTube, in retail stores, inside fan parks, through creators and through limited edition product drops. और इसी बैटलफील्ड में नाइकी और एडिडास ने कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज की। एडिडास और फीफा का रिलेशन 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1970 से हर मेंस फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल मैच बॉल एडिडास सप्लाई करता आ रहा है। एडिडास का फीफा पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2030 तक एक्सटेंड किया गया था। थिंक अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट पोजीशन। एवरी गोल, एवरी पेनल्टी, एवरी रिप्ले, एवरी क्लोजअप, एवरी विनिंग मोमेंट। बॉल स्क्रीन पर है तो एडिडास ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर है। एडिडास को लोगो विजिबिलिटी के लिए हर बार एडवर्टाइजमेंट चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्ट इटसेल्फ टूर्नामेंट का सेंट्रल कैरेक्टर बन जाता है। 2026 वर्ल्ड कप में एडिडास 14 क्वालिफाइड नेशनल टीम्स को किट सप्लाई कर रहा था, व्हाइल नाइकी है 12 टीम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीम्स स्पेन एंड अर्जेंटीना एडिडास स्पॉन्सर्ड टीम्स थी और फाइनल रिजल्ट एडिडास के लिए और परफेक्ट हो गया। स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 डिफीट करके अपना सेकेंड वर्ल्ड कप जीता। इसका मतलब चैंपियन भी एडिडास और रनर अप भी एडिडास। From an on-field visibility perspective, this was almost the best possible scenario for Adidas. But official rights alone cannot guarantee cultural relevance. और इसी पॉइंट पर एडिडास ने अपनी ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज को मॉडर्नाइज किया। एडिडास का मेन वर्ल्ड कप कैंपेन था बैकयार्ड लेजेंड्स। ये अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट फिल्म थी, लेड बाय एक्टर टिमोथी शैलेमे। कैंपेन में फुटबॉल और एंटरटेनमेंट के मेजर नेम्स थे, लियोनेल मेसी, लामिन यमाल, जूड बेलिंगहम, ट्रिनिटी रॉडमैन, डेविड बेकहम, जिडान, एलिसैंड्रो डेल पिएरो और बैड बनी। कैंपेन का सेंट्रल थॉट बहुत ही सिंपल था। हर लेजेंड की जर्नी किसी मैसिव स्टेडियम से स्टार्ट नहीं होती। कभी कभी लेजेंड बैकयार्ड, स्ट्रीट या नेबरहुड ग्राउंड से स्टार्ट होते हैं। एडिडास ने इस कैंपेन को अपनी ब्रॉडर पोजिशनिंग यू गॉट दिस के साथ कनेक्ट किया। ये सिर्फ सुपरस्टार वर्शिप नहीं था, इट वाज अ स्टोरी अबाउट फ्री प्ले, चाइल्डहुड इमेजिनेशन, कम्युनिटी फुटबॉल, लोकल लेजेंड्स और ऑर्डिनरी ग्राउंड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नीज। कैंपेन इंटेंशनली नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न कल्चर को मिक्स कर रहा था। एडिडास ने परफॉर्मेंस फुटबॉल के साथ स्ट्रीट वेयर और लाइफस्टाइल को भी अग्रेसिवली कनेक्ट किया और सांबा, स्पेजियल, प्रीडेटर साला जैसे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को फुटबॉल कल्चर के साथ इंटीग्रेट किया। दिस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम फैंस फुटबॉल बूट्स नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो रेट्रो जर्सी, सांबा स्नीकर्स, ट्रैक जैकेट, लिमिटेड एडिशन कोलैबोरेशन या मेसी इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज जरूर खरीद सकते हैं। अब दूसरी साइड पर है नाइकी। नाइकी ऑफिशियल फीफा पार्टनर नहीं था, इसलिए नाइकी ऑफिशियल टूर्नामेंट लैंग्वेज, फीफा ट्रेडमार्क्स
और टूर्नामेंट ओन एसेट्स को एडिडास की तरह फ्रीली यूज नहीं कर सकता था। लेकिन नाइकी की हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ हमेशा से एक अलग जगह रही है। नाइकी डज नॉट नेसेसरीली स्पॉन्सर द इवेंट, नाइकी स्पॉन्सर्स द पीपल हु बिकम द इवेंट। थिंक अबाउट सम ऑफ नाइकीज बिगेस्ट फुटबॉल एसोसिएशंस: क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काइलिन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड, विनिसियस जूनियर, रोनाल्डिनो, Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovic. Nike's strategy was not that हम वर्ल्ड कप के पार्टनर हैं. Its strategy was the players and personalities you care about are already belonging to our universe. और ये यूनिवर्स नाइकी ने अपने 2026 के कैंपेन में लिटरली क्रिएट किया। नाइकी का वर्ल्ड कप कैंपेन था रिड द स्क्रिप्ट। कैंपेन का मैसेज था फॉरगेट प्रेडिक्टेबल फुटबॉल, प्ले इंस्टिंक्टिवली, प्ले क्रिएटिवली, अटैक, टेक रिस्क्स एंड स्टॉप फॉलोइंग द एक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट। कैंपेन की कास्ट में करंट फुटबॉल सुपरस्टार्स के साथ लेजेंडरी फुटबॉलर्स और अनएक्सपेक्टेड कल्चरल पर्सनालिटीज को इंक्लूड किया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काइलिन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड, विनी जूनियर, रोनाल्डिनो, एरिक कैंटोना, डिडियर ड्रॉगबा, ज़्लाटन इब्राहिमोविक, एंड देन सडनली लेब्रॉन जेम्स, ट्रेविस स्कॉट, Kim Kardashian, Lisa, Channing Tatum, young Miko, or Ted Lasso. This was not designed like a conventional sports commercial. Nike described it as the entrance into an expanding football universe, जिसमें multiple stories, characters, Easter eggs and content extensions टूर्नामेंट के थ्रू आउट रिलीज होते रहे। नाइकी ने एक एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाया। नाइकी ट्राई टू क्रिएट अ कंटेंट फ्रेंचाइजी। अब नाइकी की स्ट्रैटेजी को सिर्फ रिड द स्क्रिप्ट एडवर्टाइजमेंट से जज करना मिस्टेक होगा। कैंपेन के नीचे एक मच लार्जर एक्टिवेशन इकोसिस्टम था। नाइकी ने न्यू फेडरेशन किट्स लॉन्च किए, एरोफिट कूलिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, मर्क्यूरियल बूट्स लॉन्च किए, लोकल स्ट्रीटवेयर डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेशंस किए, इमर्सिव रिटेल एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए और थाउजेंड्स ऑफ रिटेल लोकेशंस पर फुटबॉल स्टोरी टेलिंग एक्टिवेट की। नाइकी स्ट्रीट फुटबॉल इनिशिएटिव टोमा को 25 सिटीज तक लेके गया, जहां कैंपेन रिपोर्टेडली 10,000 से ज्यादा यंग प्लेयर्स तक पहुंचा। नाइकी के रिटेल एक्टिवेशंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मर्चेंडाइज डिस्प्ले करना नहीं था, स्टोर्स को फुटबॉल कल्चर स्पेसेस बनाया गया with campaign storytelling, exclusive products, personalization and athlete related hidden details. Nike's X2 collections also reinterpreted national team identities through local artists, designers and communities, connecting federation jerseys with fashion and street culture. This is where Nike's strategy became very relevant for the event marketers. Nike understood a film can generate attention, but experiences create participation. अब इमोशन साइड में रखते हैं और एक्चुअल मार्केटिंग स्कोरबोर्ड देखते हैं। राउंड 1 ऑफिशियल टूर्नामेंट विजिबिलिटी। विनर Adidas. Adidas was an official FIFA partner. It supplied the official match ball. It had 14 participating national teams compared with Nike's 12. And both finalists, Spain and Argentina, wore Adidas. Nike की फ्रांस और इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंची, बट फाइनल में एक भी नाइकी फेडरेशन नहीं थी। ऑन फील्ड विजिबिलिटी क्लियरली एडिडास के नाम। राउंड 2 अर्न मीडिया वैल्यू। विनर एडिडास। क्रिएटर आईक्यू के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जून 1 से जून 21 की पीरियड में एडिडास ने अप्रोक्सीमेटली 48.9 मिलियन अर्न मीडिया वैल्यू जनरेट किया, अराउंड 6,700 पोस्ट्स एंड ऑलमोस्ट 3,000 क्रिएटर्स के थ्रू। नाइकी ने एस्टिमेटेड 28.9 मिलियन अर्न मीडिया वैल्यू जनरेट किया, अराउंड 4,400 पोस्ट्स एंड 1,900 क्रिएटर्स के थ्रू। नाउ दिस इज नॉट अ स्मॉल डिफरेंस। एडिडास जनरेटेड अप्रोक्सीमेटली $20 million more estimated earned media value during the measured period. Lionel Messi alone was the biggest asset Adidas had. Creator IQ के अकॉर्डिंग जून 1 से जून 21 के बीच मेसी के सिर्फ 10 सोशल पोस्ट ने 751 मिलियन इंप्रेशंस और 2.5 मिलियन अर्न मीडिया वैल्यू जनरेट की। That shows the power of athlete partnerships. A tournament sponsorship gives you the rights, but one emotionally loved athlete can give you the relevance. Round 3 content, reach and cultural noise. Winner Nike. Nike के अकॉर्डिंग रिड द स्क्रिप्ट यूनिवर्स ने टूर्नामेंट के फर्स्ट वीक में अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन व्यूज जनरेट किए। नाइकी ने यह भी रिपोर्ट किया कि टूर्नामेंट के ओपनिंग फेज में उसने अपना मोस्ट व्यूड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कंटेंट अचीव किया। नाइकी's campaign had more celebrity surprise, more internet movements and more remix potential. Adidas may have generated stronger estimated earned media value, but Nike generated an extraordinary level of mass attention. So raw reach and cultural conversation में Nike को ignore करना impossible है। राउंड 4 प्रोडक्ट डिमांड। दिस राउंड इज क्लोजर। नाइकी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टूर्नामेंट स्टार्ट होने तक कंपनी हैड ऑलरेडी सोल्ड 2.5 टाइम्स मोर फेडरेशन किट्स देन इट हैड ड्यूरिंग द कंपैरेबल स्टेज ऑफ द 2022 World Cup. Nike's global football category also recorded double-digit growth across its key geographies.
That sounds like a clear Nike win, but demand तभी valuable होती है जब supply available हो. During the tournament, Nike reportedly ran out of high demand jerseys for countries including the United States, Brazil, France and Norway. In some cases, restocking peak fan interest के बाद हुआ. Adidas meanwhile appeared better stocked for teams such as Argentina, Spain and Mexico. Now this is a massive business lesson. Marketing demand create कर सकता है, but operations को उस demand को capture करना पड़ता है. Nike generated excitement, but reportedly left some potential sales on the table. Adidas entered the tournament with stronger commercial momentum. In its first quarter, Adidas recorded approximately 250 million euros in World Cup related bookings and expected a similar amount in the second quarter. Its quarterly revenue rose 14% to 6.6 billion euros. Round 5, the final moment. Winner Adidas, and this isn't close. The World Cup final is the most photographed, replayed and remembered moment of the tournament. Spain versus Argentina meant Adidas versus Adidas. Messi in Adidas, Spain in Adidas, Argentina in Adidas. The official ball by Adidas, and when Spain lifted the trophy, Adidas was visually connected with the tournament's ultimate image. Nike could not control which teams reached the final, but Adidas's wider federation portfolio increased its profitability of being represented deep into the competition. This is why sponsorship strategy is partly an investment portfolio. You do not know which athlete will become the hero. You do not know which team will get eliminated. You cannot predict any injury, upset or penalty shootout. So brands spread risk across teams, players, creators, products, markets and cultural communities. In 2026, that portfolio worked beautifully for Adidas. My final verdict is Adidas won the 2026 marketing battle, but Nike did not lose the relevance. Adidas won because it combined official FIFA rights, the official match ball, more national teams, both finalists, the winning team, Lionel Messi, stronger earned media value, better tournament-related commercial momentum, and a campaign that connected football heritage with modern culture. Nike won important individual categories: mass content reach, celebrity-led conversation, grassroots activations, retail experiences, community participation, and the ability to remain culturally dominant without official FIFA sponsorship. But when we combine official visibility, earned media, finalist representation, and commercial conversion, Adidas had the more complete tournament. So my score would be Adidas 4 rounds, Nike 2 rounds. Nike created the louder cultural interruption. Adidas built a stronger end-to-end World Cup system. मेरे लिए इस केस स्टडी का लेसन फुटबॉल से ज्यादा स्पॉन्सरशिप के बारे में है. बहुत सारे ब्रांड सोचते हैं वी हैव टेकन स्पॉन्सरशिप, लोगो स्टेज पर लगा दो, ब्रांडिंग गेट पर लगा दो, सोशल मीडिया पोस्ट कर दो, वर्क इज कंप्लीटेड. बट स्पॉन्सरशिप राइट्स आर नॉट द कैंपेन. Sponsorship rights are only the entry ticket. Both brands understood one thing: visibility without activation is just an expensive wallpaper. A brand cannot simply appear at an event. It must give the audience something to watch, experience, wear, share, collect, discuss or participate in. Official partnership can buy access, but it cannot buy audience emotion. If Adidas had only placed logos around the tournament, Nike could have easily dominated the cultural conversation. Rights create opportunity. Creativity converts that opportunity into attention. Both companies started their campaigns before the tournament. They planned hero films, product launches, athlete stories, retail activations, community events, social content, real-time responses, and final stage creative. A major event should not be considered as a one-day activity. The correct structure is: before the event, build anticipation. During the event, create participation and react in real time. After the event, extend the memory and convert the attention into sales. A celebrity can get injured. A team can get eliminated, a campaign phase can enter controversy, a match can become boring. This is why both companies created an ecosystem instead of depending on one asset. Messi was powerful for Adidas, but Adidas also had Yamal, Bellingham, teams, the official ball, collaborations and FIFA rights. Nike had Ronaldo, Mbappe, Haaland and Vinny, but also retail, technology, street football and entertainment personalities. Never build a large campaign around a single point of failure.
Nike reportedly generated exceptional jersey demand, but when popular product sells out and cannot be restocked during the peak cultural moment, the marketing engine and supply chain engine are working in different speeds. This applies to every business. Do not launch an advertisement without preparing sales. Do not create event footfall without preparing manpower. Do not generate leads without preparing follow-up. Do not create product hype without preparing inventory. Marketing brings people to the door. Operations decide whether money enters the business or not. So Spain lifted the World Cup and Adidas won the official brand battle, and Nike proved that even without owning a tournament, a brand can still own a major part of culture around it. That is the fascinating thing about marketing. The biggest logo does not always create the biggest impact. The official sponsor does not automatically own the audience. And the brand with the most views does not automatically generate the highest business in return. The real winner is the brand that connects rights, creativity, culture, distribution, and conversion. For World Cup 2026, Adidas connected those elements slightly better. But this rivalry is far from over. Because matches end after 90 minutes, brand battles don't. Let me know in the comments. Were you more impressed by Adidas' backyard legends or Nike's rip the script? And according to you, who actually won the World Cup marketing battle? If you enjoy business studies, hidden behind, major events, brands and marketing campaigns, subscribe to this channel. Because here we just don't discuss what happened, we discuss the business behind why it happened.